So nepotism सिर्फ फिल्म fraternity के लोगों तक सीमित नहीं है, वो फिल्म fraternity के बाहर से जो आते हैं लोग, उनको भी उसका फायदा मिलता है। एक्सपीरियंस तो ऑफ कोर्स अच्छी बुरी दोनों फिल्में करके मिलेगा। एक्सपीरियंस सिर्फ हिट फिल्मों से नहीं मिलेगा, सिर्फ आपकी मेहनत पे डिपेंड नहीं करता है, बहुत सारे लोगों की मेहनत पे डिपेंड करता है, बहुत सारे लोगों के नसीब पे डिपेंड करता है, और फिर जाके ये फिल्म एक्सेप्ट होती है। पुश्ता है was a good experience for sure because of that song especially, वो आज भी फेमस है। Hi, this is Tusshar here and you're watching me on Bollywood Hungama. Do you remember the first time you realized, oh, dad is a star? क्या वो moment था जब आपको ये suddenly realize हुआ? I think we grew up accepting that fact that he was a star. But I remember going to school. तो जब मैं स्कूल जाता था तो of course all the drivers would stand outside and all the staff members would wait for the kids, you know. वो तो सबसे पहले हम गाड़ी से निकलते तो हमको देखते थे. तो you get to know, तो थोड़ा एक होता है कि when you are born to somebody who's so famous, तो you are watched. एक फीलिंग आ जाती है कि आपके ऊपर एक कैमरा, सटल कैमरा है. तो दैट आई थिंक मे बी दैट्स व्हाई आई बिकेम अ बिट शाय. आई मीन आई बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज मे बी समटाइम्स यू ग्रो अप फीलिंग लाइक यू आर बीइंग जज्ड, दो इट्स नॉट सो बैड. आई मीन वी हैड friends of our own at home and we were free to play very well, but फिर भी क्लास में जब फिल्मों की बातें होती थी सब मुझे देखते थे. So you know, when you're a filmy kid of that sort, you sometimes get treated very differently by the world, maybe not by your own family members, or you're not. I wasn't very pampered as a kid. I never been a spoiled kid. but आपको एक अलग नज़रिए से देखा तो जाता है, तो आप बड़े होते होते समझ जाते हैं कि हम थोड़े अलग माहौल में बड़े हुए हैं. हम एक अलग फैमिली से हैं, अलग इन द सेंस एज फार एज पब्लिक इमेज इज कंसर्न, यू नो, कि आप फादर इज रिकग्नाइज्ड. तो शूट्स पे तो हम ज़्यादा जाते नहीं थे. अच्छा. सो फिल्मी एटमॉस्फेयर से वाकिफ़ थे नहीं, हम कभी पार्टीज़ में गए नहीं एज किड्स. एंड उस ज़माने में तो मतलब सोशल मीडिया था नहीं, पेपराज़ी था नहीं. So, was this a conscious effort by parents to not involve you all in that side of the... I think my mom says that she didn't want to really expose me to a filmy atmosphere, but I would say there's nothing wrong. I ask my son to come to my set sometimes. He should know what I'm doing also. उससे कुछ होता नहीं है अगर आप मतलब अपने बच्चों को expose भी करते हैं, but it should be organic. It should not be, you know, हद से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और हद से ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए. You know, they should have a normal upbringing, which I believe. But yeah, उस time पे even though we were protected a bit, फिर भी you know, the fame का जो एक तजुर्बा वो it creeps in and you realize that, you know, you're being analyzed a bit, you're being judged and studied a bit. Yeah. How was younger Tusshar Kapoor's reaction when he saw dad on the big screen? Do you remember the first film जो आपने उनकी देखी थी? No, I don't remember on screen. कभी मैं पहली बार गया होगा. I remember हम लोग जाते थे गेटी गैलेक्सी, उस ज़माना अभी भी है, गेटी गैलेक्सी जाते थे फिल्में देखने. बैंड्रा टॉकीज जाते थे, न्यू टॉकीज था. आई थिंक दोज सिनेमाज आर नॉट देयर एनीमोर, बट गेटी गैलेक्सी इज स्टिल देयर. So I used to go and watch movies there, but I don't remember the first time. But I remember the first time going for dubbing. I used to love going to dubbing with him. I don't know why. I found it very exciting. He's up silent hai, and then he's dubbing his lines, and then one more. Dubbing हो रहा है. There was a movie called Khandan which released in the very early 80s. Okay. Dad की movie. तो I remember केतनव में गया था मैं dubbing के लिए with him. I must have been 3 or 4 at that time. So that I remember an experience, and it stayed in my mind. The red dubbing theater, Ketnav is red sofas and उसका decor भी बहुत 70s style था. Okay. उस ज़माने का, and old school filmy, if you know what I mean. So I remember going to that dubbing theater and watching खानदान की dubbing. अरे वाह. अच्छा, आपने 4 साल की बात की. When you were 5 years old, I believe that you got lost in Disneyland. ये क्या किस्सा था, हमें बताइए please. I like it that you watch all my interviews. सारे मेरे interviews. What? No, not at all. ये सारी चीज़ें बाहर आ रही हैं. Interviews से ही हुआ है ये. Yes, I remember I was in Disney World in 1982, and there's a monorail that goes from the hotel to Disney World. So it's all part of the same complex, little away. So that monorail that goes also brings all the hotel guests back to the hotel after. If you have a ticket, you can come back also. So I remember my family in the evening after we finished Disney World, they came back on the monorail.
and I think I was left in the station. I forgot to board the train. इतने सारे बच्चे थे, cousins थे, ये वो. So I think my parents must have forgotten. होता है कभी-कभी ऐसा. So I was a bit lost. I was looking around. Where is my family? Where is my family? I was just looking around. This is like Home Alone. Yeah, this is like, you know, you see videos now. Sometimes you see a video on TV or on YouTube of some child getting lost or something. You know, it's scary. I remember getting a little worried and nervous. Where is my family and where am I? Where am I? And then suddenly I realized Dad has come back. He came back on the next train after half an hour. After 20 minutes, I think. Oh. So I don't want to relive that experience again. Yeah. So it was okay because I think they found me. कहीं किसी ने उठा लिया होता तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होता. Oh my God. We're glad. We grew up in America and some other family. I would not know also. ये तो full filmy story लग रही है मुझे एकदम. Yes, yes. I'm glad it didn't happen, but of Yeah. course. आपने हाल ही में एक और चीज़ कही that you know your relationship with your dad has improved right now. Why would you say that? No, I think it was misunderstood. थोड़ा एक इंटरव्यू में मैंने कहा कि it took me a long while. ऐसे मतलब एक जो headline था कि it took me a long while to become friends with my father. That's not true. We always had a friendly relationship, but it was more respectful. Okay. It was not like the father sons of today are very different. और आप किसी भी इंडियन फैमिली जाओ, उस ज़माने के फादर सन में हमेशा एक अंतर होता है, एक डिस्टेंस होता है जो रिस्पेक्ट का है. You're older, your father. I can't speak loudly near you. I can't use bad words near you. That is what I meant. Yeah. तो अभी obviously because now I'm 46, तो रिस्पेक्ट होते हुए भी I can speak freely and I can be myself near my family, my parents. Yeah. I can say anything. अब सबके साथ ऐसा होता है when you grow up. So that's what I meant कि now I think because I'm an actor too, so he knows the ins and outs of this profession and he knows and we've been together in the pandemic and all that. तो हम खुल के बातें करते हैं. So that is what I meant. कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैं मतलब बहुत उनसे खफा था या उनसे मतलब बहुत मतलब कि अलग किस्म का इंसान था. That's not true. It's just that we had a little different relationship in the sense that today me and my son we're like my best friends. So he can tell me like, Dad, Papa, I don't want to come with you. You don't come to my school. Papa, I don't want to sit with you. I don't want to read a book with you. You know, he can tell me that he wants to have his own independence. We could not do that then. That is what I meant. Nice. जब आपने decide किया that you want to get into films, how was Dad's reaction? मैंने कभी डिसाइड नहीं किया कि I want to get into film. जब मुझे ऑफर आया तो मैंने बोला कि मैं इसको लूँगा. एक चांस मिलता है सबको लाइफ में. कभी-कभी आप कंफ्यूज रहते हैं. So गोइंग अब्रॉड वाज हेल्पफुल कि मुझे पता चला कि मुझे बिजनेस वर्ल्ड में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग नहीं करना है. मुझे फाइनेंस की दुनिया में मतलब फुल फ्लेजेड नहीं रहना. आई एंजॉय फाइनेंस बट मे बी आई विल डू इट लेटर एज एन एक्टर और एज अ प्रोड्यूसर और एज अ डायरेक्टर. आई डोंट वांट टू गेट इनटू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड. तो वो मैं क्लियर था उस बात को लेकर, लेकिन ये पता नहीं था कि फिल्मों में क्या करना है, क्रिएटिव वर्ल्ड में क्या करना है. सो जब मुझे ऑफर आया तो आई सेड नो, आई एम गोइंग टू गिव दिस फिल्म अ शॉट and try becoming an actor. When it became a hit, when I started working in the movie, then of course it became a passion for me. Yeah. So when I said yes to the film, then I told my family, I told my father कि ये फिल्म मिली है, ये रीमेक है, थुली प्रेमा, पवन कल्याण की फिल्म का रीमेक है और वाशु भगनानी wants to make it. सतीश जी will be the director. He saw the film and he said it's a beautiful film. He said I can't give you a launch. I will not be able to give you a better launch than this. अब जो तुम्हें खुद मिला है, वाशु जी से मिला है या रूमी भाई की वजह से या टूटू की वजह से, तुम इसको कर लो. बिकॉज वाशु जी इज़ अ वेरी बिग प्रोड्यूसर, सतीश जी इज़ अ वेरी बिग डायरेक्टर, एंड इफ दे आर लॉन्चिंग यू, दे विल गिव यू द काइंड ऑफ लॉन्च जो मतलब कि उस टाइम का आज एक न्यू कमर को मिलना चाहिए. So, and Vashuji's promotion, everyone should talk about it at that time because he used to do all new things, innovative things, pads and pens and you know मूवी की सारी जो एक merchandise होती है उस तरीके की प्रमोशन करते थे. promos अलग तरीके के काटते थे. So he was very famous for that, which he is now also, but now everybody does it. But that time he was like a pioneer. So my dad said नहीं, आप ही कर लो ये फिल्म. क्या बात. And then when he saw the film, क्या reaction था? Did he say anything that still stuck? I don't remember. I think they all liked it a lot. They all liked it, but we were all just keeping our fingers crossed and they were not saying much. I remember मैं मेट्रो गया तो मुझे ऑडियंस के रिएक्शन का इंतज़ार था और मुझे जानना था कि ऑडियंस फिल्म के नंबर्स क्या होंगे, फिल्म चलेगी कि नहीं. एंड मोर देन एनीथिंग आई वाज जस्ट गोइंग विद द फ्लो बेसिकली. एंड
ऐसा नहीं था कि I was waiting to know what my family thinks. They were very, very confident, and then everybody just unanimously loved the movie because the audience only was so happy with everything about the movie. Yeah. The public, I mean, कि my family also, of course. मैंने तो पूछा भी नहीं होगा उनको. I don't remember asking them. अच्छा, another film that I thought was amazing was कुछ तो है. I am not a big fan of horror films, but ये film मुझे देखनी थी. There was a lot that was happening, and again the story, the twist that happened. We've seen, I Know What You Did Last Summer and all that, but इसमें एक बहुत अलग तड़का था वो. It was a Bollywood fresh feel. तड़का, हाँ, It was like totally. a Bollywoodish filmy film, but फिर भी थोड़ा एक young, एक fresh vibe था film को लेकर. बिल्कुल. Genre अलग था. Yeah. Rishi Kapoor playing a professor and shot in Manali. So I think, and the promos, Ding Dong Ding Gana. Yeah. The promos were very appreciated with the youngsters. Correct. And the movie did okay also. It's just that it was overspent, over budgeted, मतलब कि हमने extra shoot किया था, तो it didn't make money, but did reasonably okay business. So yeah, कुछ तो है was a good experience for sure because of that song especially. वो आज भी famous है. Instagram पे I think reels अभी भी Ding Dong Ding की बहुत reels मुझे tag होती रहती है. साइबो की और Ding Dong Ding की अभी भी मुझे बहुत messages और tags आते हैं. How was it working with Dad? He had a small scene in the film, so it was a nice. I mean, पता भी नहीं चला कैसे खत्म हो गया वो scene. I remember, but I remember in the van we were eating together, and I remember he saw me eating too much, and I think I was a little overweight at that time. He said, "Try and eat a little light when you're shooting." So that piece of advice has stayed with me till today. That I learned it a little later, but it's very important for an actor to be fit on screen. Yeah. And at that time I was a little 3-4 kilos. थोड़ा overweight. I used to go up and down, fluctuate, but I used to bloat up a lot. So that is probably because I was overeating and I was exercising, but my diet was not correct. So all this I learned, gradually. Somehow I learned it on the job over a number of years, and I'm very grateful कि audience ने मुझे इतने सालों तक झेला है for me to pick up these tricks of the trade. But I remember dad का जो advice था वो बहुत काम आया. क्या बात है. Now, there have been films that have worked, and we've also had failures. How do you deal with, a film not working? शायद आपने बहुत उम्मीद लगाई हो. How is your procedure of, okay, a film's not worked? क्या करते हैं आप? That time तो अभी बहुत मतलब कि disappointment होती थी उस time पे. I was young and I used to feel disappointed, and then 2-3 दिन उस ज़माने में मतलब इतना मतलब अभी तो मतलब people move on so fast. And you're not as good as as bad as your last film. अभी वैसा नहीं. अभी मतलब it's like you can just do so many things and just move on to the next thing very, very quickly. At that time there was I think a little lesser media but more spotlight. और ऐसा लगता था कि आप बाहर जा रहे हैं तो अगर आप फिल्म पार्टी में जा रहे हैं कहीं जा रहे हैं तो सब आपको देख रहे हैं कि आपका क्या रिएक्शन है, आपकी पिक्चर चली नहीं है. At that time I think there was that kind of a feeling. अभी तो मतलब इतना कुछ हो गया, इतनी फिल्में लगती है हर हफ्ते, इतना OTT कंटेंट भी आ गया, इतनी टेलीविजन का कंटेंट है. पर तभी क्या these things mattered to you, and how was Yeah, I used to feel disappointed for sure, and then gradually I got so used to it कि कुछ सालों बाद ऐसा होता था कि पिक्चर नहीं चली और 4 बजे तक मुझे बुरा लगा है, 4 बजे के बाद I have moved on. That it still hurts, it's disappointing, but 4 बजे के बाद I've moved on. Sometimes ऐसा लगा है कि आप एक फिल्म खत्म होगी और अब टाइम भी नहीं मिला है उसकी सक्सेस या फेलियर को enjoy या मोन करने का, और आपने दूसरी फिल्म का प्रोमो लॉन्च कर दिया. I remember there was one film C Company that released in 2008 and it didn't work and I was a bit disappointed. But in a couple of days गोलमाल का promotion शुरू हो गया, गोलमाल रिटर्न्स का, and I was happy with that. I was just like, okay, now ये नहीं तो ये सही. So over a bit of time I think we become stronger, we become more aware कि you are not about your last film. Right. You are about your entire body of work. And आप कितना भी कंट्रोल कर लो, आप कितना भी मेहनत कर लो, आप कितना भी मतलब स्क्रिप्ट बार बार पढ़ के चूज करके आप फिल्में करो, there will be films that will go out of your control, जो आपके हाथ से चले जाएंगी, जो आप कितना भी कुछ ना करें लेकिन उनके साथ सब कुछ बुरा ही होगा और वो नहीं चलेंगी. And there will be some films जो सब कुछ अपने आप
fall into place होते रहेगा. This line is like this is very unpredictable. सिर्फ आपकी मेहनत पे डिपेंड नहीं करता है, बहुत सारे लोगों की मेहनत पे डिपेंड करता है, बहुत सारे लोगों के नसीब पे डिपेंड करता है, और फिर जाके ये फिल्म एक्सेप्ट होती है. But has there ever been regrets on, you know, taking up a role? कि ये क्यों लिया आप? क्या आप do you analyze Yeah, your there are some work? films that I could have avoided. Do you want to take names? I don't mind taking a name, yeah, but yeah, there was one film called Shart, which I did in early 2000s, and I didn't want to do it, but by then it was too late, so I had to do it. और वो पिक्चर मेरी प्रेडिक्शन सही रही, वो पिक्चर डिले हो गई, और जब आई बाद में किसी को मालूम ही नहीं पड़ा, आई गई. हाँ. So there are these films, हर एक्टर के पास एक दो तीन ऐसी फिल्में होंगी जो आप कह सकते हैं कि उनको लगेगा कि ये फिल्म नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उनको करनी पड़ी, या फिर बाद में it comes back to you like like कर्मा, आपकी याद दिलाने के लिए कि आपने ये फिल्म की थी और सब कुछ अच्छा हो रहा है, सडनली ये फिल्म आएगी बीच में सब खराब कर देगी. So that is part of the game. So Sharat was one film which I remember I should not have done. But I mean, you've done 70 days of shooting, आपने कैमरा फेस किया, आपने सॉन्ग्स किए, आपने फाइट्स किए, कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा. एक्सपीरियंस तो of course अच्छी बुरी दोनों फिल्में करके मिलेगा. एक्सपीरियंस सिर्फ हिट फिल्मों से नहीं मिलेगा. That's amazing, Tushar. That's amazing. Has there ever been a time where you've said no to a film and then maybe regretted it कि ये role? I have not left a single film really that has done well. I feel very proud of that. Yeah. But I feel I could have done more films. चाहे वो flop भी रही हो, I could have done more films. Yeah. There's no harm in doing films that don't work. Correct. कौन याद रखता है? तो कुछ ना कुछ उससे भी निकल आता है. हाँ. So I shouldn't have been so harsh on myself also. But जो भी फिल्म मैंने छोड़ी है, वो नहीं चली है. जो नहीं. But एक फिल्म थी that I remember some. I don't even know this, but there's one film. I won't name it, but okay. Yeah, जो we'll just guess it. Critically acclaimed थी. Okay. और डायरेक्टर ने मुझे कहा कि वो आए थे मुझे मिलने, और मैंने मतलब शायद मना कर दिया या जो भी हुआ, लेकिन रोल की वजह से, और वो रोल अच्छा नहीं था, वो रोल इतना अच्छा नहीं था, लेकिन वो फिल्म थोड़ी चल गई और बहुत क्रिटिकली अक्लेम थी. सो आई डोंट नो वेदर आई शुड रिग्रेट इट और नॉट. और वो रोल कैसा था अब जब आप देखते हो उसको? अभी भी मैं देखी फिल्म, इट वाज अ वेरी सपोर्टिंग रोल. सो आई कुड हैव डन इट, आई कुड हैव नॉट डन इट. Either ways, it's fine. But to be part of that film would have been a good. Now, इतना you have told us. One film in 22 years. But it was not a hit film, but it was a. कौन से साल में आई थी वो? फिल्म का फर्स्ट लेटर क्या है? उससे ज्यादा नहीं पूछना. फिल्म का फर्स्ट लेटर क्या है? उससे ज्यादा नहीं बताऊंगा. 2006 में आई थी. 2006. Come on, guys. Let's start working on this. Now, I have a very loaded question. What are your thoughts on nepotism? Very simple. There are no free lunches. Of course, if you are from the film fraternity, you might get your first film a little easier. लेकिन वो आज भी नहीं, इतना easy नहीं है. बहुत सारे सुपरस्टार्स के सुपुत्र या फिर उनकी बेटियां वेट कर रही हैं लॉन्च के लिए. A lot of them, from this area in Juhu only. And for no fault of theirs, which just things have not worked out. So there are no free lunches. Of course, कभी-कभी आपके chances to get a first film is probably brighter if you are from the film fraternity. लेकिन उसके बाद the game is fair. And इतने सारे लोग हैं जो आज फिल्म इंडस्ट्री के बाहर से आते हैं. बहुत सारे लोग जो बाहर से आते हैं, वो भी ग्रुप्स में हैं, वो भी पावरफुल लोगों के करीब आ गए हैं. तो नेपोटिज्म वहाँ भी है. So and there are a lot of people who are born to film families and who are star kids, star sons and star daughters, और उनकी जानकारी ज़्यादा नहीं है लोगों के साथ. They're not invited to the best parties and they're not able to get the best movies. So nepotism सिर्फ फिल्म फ्रेटर्निटी के लोगों तक सीमित नहीं है. वो फिल्म फ्रेटर्निटी के बाहर से जो आते हैं लोग, उनको भी उसका फ़ायदा मिलता है. पर क्या आपको लगता है that it's high time that the film industry needs to have a system instead of just जान पहचान and then चलो आ जाओ फिल्म करते हैं. जान पहचान के बाद भी आप अगर कमर्शियली वायबल नहीं हो, अगर आप डायरेक्टर के लिए रोल सूटेबल नहीं है आपको, तो आपको ऑफर नहीं किया जाएगा. यू हैव टू बी कमर्शियली वायबल ऑल्सो. तो ऐसे तो मतलब नाउ मतलब you have to accept that everything cannot be so. We're not in a Truman Show. We're not in a perfect world. There will be inconsistencies and that's in society in any profession. Right. अगर आप ऐसे सोचिए कि अगर उसको इस वजह से फिल्म मिल गई, मुझे नहीं मिली, तो फिर आप how will you fight the battle? How will you move on? How will you? There'll be things जो हमारी मेरी जो आपकी एडवांटेजेस हैं जो किसी और की नहीं होंगी.
अभी अब कोई बोलेगा कि अरे यार ये फिल्म फैमिली वाला है या ये फिल्म फैमिली की है इसलिए उनको ये फिल्म मिली, तो अगर वो इंसान, वो हीरो या हीरोइन जो कंप्लेन कर रहा है, इफ शी और ही इज वेरी गुड लुकिंग एंड प्रिटी, somebody will complain she is a model or he is a model, that's why he's getting a film and not because of, and I'm talented, I'm not getting it because of that. So there will always be differences, Right, no? right, right. It's not just because of being part of the film fraternity. We all have differences and somebody will like something about us. किसी ऑडिशन में किसी एक चीज़ की वजह से किसी को कुछ मिल गया, you can't say अरे उस वजह से उसको मिल गया, that's not fair. आपके नाम में double S है, was that like always there or did it come after? No, maybe? that my family recommended a numerologist to me, Bansilal Jumani, जो अभी नहीं है इस दुनिया में. He met me and he said, please add this S and remove the Kapoor for film purposes, for most purposes. Did, so I did life it, yeah. change after that? I don't know, पहली फिल्म के पहले ही था. हाँ. तो I'm not a very active believer in numerology, Okay. but I'm not a disbeliever also. Okay. तो मेरी फैमिली ने कहा कि आप हम बिलीव करते हैं, आप हमारे लिए कर लो, तो मैंने कर लिया. So sweet. Why not? Yeah. But it's about not getting too caught up in this. You know, that is very important. कि you can do, अगर आपका कोई astrologer हो या आपका कोई numerologist हो, there's no harm in believing in it. There is a science behind it, and there are a lot of things about this world, about the universe जो हम नहीं जानते. So it's not good to just discard something and say, oh, this is superstition. But at the same time, हम अगर उसी में caught up हो जाएं तो हम मेहनत कब करेंगे? Correct. You know, थोड़ा believe करो, फिर छोड़ दो. Hi, this is Tushar here and you're watching me on Bollywood Hungama.